हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। यस, ओके। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता रहा हूँ और उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप करने हैं। यस, कर लेंगे। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2 वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन। सो सपोज Z1 इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर से x1 प्लस आयोटा y1। Real part x1, imaginary part y1. So here we write real part of z1, that is x1, and imaginary part of z1, that is y1. Clear? Similarly, if we take z2 as x2 plus iota y2, it means real part of z2 is x2 and imaginary part of z2 is y2. Very simple. Now we want to multiply z1 into z2. See what we are getting: z1 into z2, x1 into x2 minus y1 into y2. Y minus because iota square is minus, plus iota x2 into y1 plus y2 into x1. Correct? What is the question? Question is find the real part of z1 z2. So what is real part? This one. So here we write real part of z1 z2 equals to x1 x2 minus y1 y2. What is x1? x1 is real part of z1. What is x2? Real part of z2. What is y1? Imaginary part of z1 and imaginary part of z2. What we want to prove? Now suppose the question is, बाय द वे ऐसा होता है क्वेश्चन कि z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट निकालो, तो क्या लिखते हैं? x2 y1 प्लस y2 x1। अब इसके बाद आप अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। x2 की जगह क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ z2। y1 की जगह क्या लिखेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इट्स फॉर यू। करेक्ट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बस प्रैक्टिस मांगते हैं। आप करते जाइए। फोर्थ पार्ट, x माइनस आयोटा y इज गिवन। वी वांट टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज दिस वन। इन क्वेश्चंस की क्या ट्रिक है? दो ट्रिक है। मैं करता हूं इसको फर्स्ट ट्रिक से। कैसे? x प्लस आयोटा y टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ द साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ द साइड। तो इस साइड का कॉन्जुगेट किया तो ये बन गया, और इस साइड कॉन्जुगेट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? दिस इज नंबर 2 एंड क्वेश्चन इज नाउ वी मल्टीप्लाई 1 and 2. सो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। राइट हैंड साइड इनसाइड द रूट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर सी स्क्वायर माइनस what we are getting? X square plus y square, y square plus y square, iota square is minus 1 equals to inside the root a square, the same thing, and c square plus d square. We want whole square of x square plus y square. So one last step, squaring both the side and you are getting what we want to prove. Answer. See, कितना आसान। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th, सेम ट्रिक, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ द साइड। सो दिस साइड विल बिकम a माइनस आयोटा b, दिस साइड विल बिकम x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, एंड सिंस इट इज अ रियल क्वांटिटी नो चेंज। इमेजिनरी है ही नहीं, आयोटा है ही नहीं, तो कॉन्जुगेट कैसे बनाएंगे? रिमेन एज इट इज। Again, suppose it is number 2, this is number 1. Multiplying these two, same trick. So a plus iota b into a minus iota b. This time I am writing directly. A square plus b square. X plus iota, x minus iota. X square minus iota square whole square divided by 2x square plus 1 whole square. वापस चेक करो। a plus b and a minus b. A square minus b square but iota square b square. x plus iota and x minus iota, x square minus iota square whole square is whole square and 2x square plus 1. What we are getting?
x square. What is iota square? Minus 1 whole square. 2x square plus 1 whole square. It is nothing but a square plus b square. See, kitna aasan. 2 lines only and you are getting 4 marks. Next sum. Sum number 16th. A plus b whole cube. And you know the formula of a plus b whole cube. First we write the formula of class 9th. A cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b. You know very well. So starting with a plus b whole cube. X plus iota y whole cube is x cube plus y cube 3 and a plus b. Simple. Right hand side x cube. Iota cube is minus iota. Y cube. 3xy. So it will become 3x square y iota. And this will become minus 3xy square. 3xy square and y minus iota square is minus 1. Hence the real part x cube minus 3xy square and imaginary part 3x square y minus y cube. It is x plus iota y whole cube. We want to prove u by x and u v by v. If this is given as u plus iota v, it is u plus iota v. So what is u? U equals to x cube minus 3xy square and compare v equals to 3x square y minus y cube. But what is needed? U by x is needed. So what is u by x? X square minus 3y square. And what is v by y? 3x square minus y square. We want to add these two. So adding 1 and 2. When you add these two, u by x plus v by y equals to, see, x square and 3x square, 4x square, 3y square, 4y square. What is common? 4. X square minus y square. See, RHS. Now we'll start sum number 17th. And this is the question of the day. This is my favorite question. Okay. Why favorite? Because the property mod z square is z into z bar, which we have completed in the first lecture of the complex number. So in this question, especially we are using this property. Suppose this complex number is z. So beta minus alpha 1 minus alpha bar beta mod z square. We can write as beta minus alpha 1 minus alpha beta into its conjugate. If this one is z, what is the conjugate? Beta alpha 1 minus इसका conjugate alpha हो जाएगा, इसका conjugate. Simple. जो conjugate था वो बिना conjugate हो गया और जो conjugate नहीं था उसका conjugate. Now simply expanding. Beta into beta bar, beta into alpha bar, alpha into beta bar, minus minus plus. Simple algebra. Correct? 1 into 1, alpha beta bar beta, minus minus plus alpha bar beta bar. Now see, beta into beta bar, again the same relation. We can write mod beta square. We can write as it is. And here again, mod alpha square. Same rule. Denominator, 1 minus alpha bar beta, and this is mod alpha square and this is mod beta square. But what is given to you? Mod beta is given to you 1. That's why for this one 1, this one again mod alpha square as it is. Now the denominator 1 minus alpha bar beta plus only mod alpha. Why? The same thing. Mod beta is given 1. Now tell me, what is numerator 1 and 1? Correct. Minus alpha beta bar, correct. Minus alpha bar beta, correct. And correct. Numerator is same as denominator. It means these two cancel out. What we are getting? 1. So when this square is 1, so what about
beta minus alpha. This again, what a simple question. Correct. But starting point, this one is important. There are so many methods for solving this question, but I feel that this one is the best method. Okay. Next is sum number 18th. तो बढ़िया लगा ना ये क्वेश्चन 17th 18th 1 minus iota mod 2 power x is 2 to power x. What is mod of 1 minus iota? You know, 1 square plus 1 square, that is root 2, but we want its power x is given as 2 to power x. What is 2 to power? That is half x by 2. Very simple. Power to power जब भी होती है multiply हो जाती है. Now bases are same. We have to compare the powers because bases are same. Hence x by 2 equals to x. And it is possible when x by 2 is 0. So x is, so what we write? This equation as no non-zero integral solution. Correct? Yes. Now we start sum number 19th. इसके भी दो मेथड हैं. पहले हम करते हैं फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड अपना वही taking conjugate both the side. So if we take conjugate a minus iota b, c minus iota d, e minus iota f, and g minus iota h. So this side a minus iota b. Taking conjugate both the side. Now multiplying 2 and 1, same idea जो आज करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में. So when you multiply 1 by 2, left hand side a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, g square plus h square, and capital A square plus b square. Hence proof. Oh, कितना आसान. सेकेंड मेथड भी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं याद आए तो. सेकेंड मेथड we'll take conjugate in first method. In second method we'll take modulus both the side. So modulus a plus iota b, c plus iota d, e plus iota f, g plus iota h, and a plus iota b. Taking modulus both the side. Modulus of combined product, it means modulus of separate complex numbers. So modulus of a plus iota b, modulus of c plus iota d, modulus of e plus iota f, modulus of g plus iota h, and modulus of a plus iota b. Both the side हमने ले लिए modulus. अब बताओ, modulus of a plus iota b complex number is root of a square plus b square, similarly c square plus d square, similarly e square plus f square, and g square plus h square, a square plus b square. Same thing, both the side. We want without root answer. It means squaring both the side. What we are getting? A square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, g square plus h square, and proved. Easy. LHS equals to RHS. And now the last sum. Last sum is again a simple question. One plus iota and 1 minus iota to whole power m is given as 1. And we want to calculate the positive integral values. Positive integral values. Now tell me, whenever iota in the denominator, we have to rationalize it. That means we want without imaginary quantity in denominator. Same as in class 9. कभी भी irrational number आता था तो हम क्या करते थे, उसको अवॉइड करते थे. वही तो 1 plus iota, 1 minus iota, 1 plus iota conjugate से हम मल्टीप्लाई करेंगे. LHS RHS remain 1. A plus b into a minus b is a square minus b square, and numerator a square plus b square plus 2ab. Simple.
What is iota square? -1. Iota square -1 plus 1, 2. 1 and 1 cancel out. 2 iota by 2, that is iota to power m equals to 1. और हम सब जानते हैं चैप्टर शुरू किया तब से आयोटा की पावर फर्स्ट इंटीग्रल नंबर ऐसा कौन सा जिसकी पावर से वैल्यू आ जाए 1. वेरी सिंपल, m इक्वल्स टू 4. इसके बाद क्या होगा? 8, 12, 16, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4. देन ओनली आयोटा टू पावर मल्टीपल्स ऑफ 4 इज ऑलवेज 1. सो आंसर 4. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या होमवर्क है? बहुत सारा होमवर्क है. ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कट कर दें क्योंकि हमने कर लिए. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस बहुत ही आसान जिनको हम पहले ही कर चुके हैं इज फॉर योर होमवर्क एंड कंप्लीट द चैप्टर. तो अगली बार मिलते हैं स्ट्रेट लाइन नया टॉपिक लेकर के, बढ़िया सा टॉपिक. ओके, तब तक सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से शेयर करना है और अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना है. मिलते हैं अगला टॉपिक लेके. तब तक टेक केयर, गुड बाय.